Hello students, how are you all? Hope you are good. Okay, let's not waste time and move to our topic. Today we are going to read the fourth chapter of your plus 2 first year, book 1. Book 1, fourth chapter. Okay, open your books. So, the topic is in London in -4. Topic is in London in -4. So let's discuss something about the title or the topic. What is in London in -4? London रे -4. Definitely कौन बुझुच तमे मनु कौन भावना आसुची लंडन रे बोध हुए टेम्परेचर -4 हो जाइछि नहीं no it's not it is all about the father of our nation Mahatma Gandhi, his behavior, his nature, what kind of person he is, it's all about that. Okay, so let's move to the text. Introduction, the author introduction टिके देखिबा एटा लिखिचंती किए लुइस फिशर तांकर डेट ऑफ बर्थ होची 1896 and death होची 1970. He is an outstanding American writer, columnist and analyst of world affairs. He occupies a unique place among Gandhi's admirers in the West. He has closely studied the life and teaching of Mahatma Gandhi in his book Life of Mahatma Gandhi. महात्मा गांधी को विषय से कहते हाईली इन्फ्लुएंस होती महात्मा गांधी को द्वारा से तो तांको विषय से लिखिचंती कौन लिखिचंती चलो देखिबा. So directly to the text. Gandhi sailed from Bombay on SS Rajputana at noon on August 1931 accompanied by his youngest son Devdas, his chief secretary Madhav Desai, who he said out Boswell, Mrs. Slade, Parlal Nayar, N.Ed, G. Birla, the textile millionaire, Pandit Malviya and Mrs. Naidu. This is one sentence. So, ए गोटिए सेंटेंस भितर पिले तमर 5-6 क्वेश्चन अछि. कौन देखो गांधी sailed from Bombay. कोठु बाहर ले गांधी वर्तमान बॉम्बे एबेर जोटा में मुंबई बोली कहूछु. ओके सो बॉम्बे रो बाहरिले ऑन द SS राजपुताना कोथिरे गले रे सेते बेले देखो पिले लैंड ट्रांसपोर्ट एयर ट्रांसपोर्ट रो फैसिलिटी नथिला. जी जोठी की भी जाउथिले केमिति जाउथिले रे थ्रो वाटर ट्रांसपोर्ट बा जहाज रे बसिकी जाउथिले पानी जहाज रे बसिकी शिप रे जाउथिले. सो ये वर्तमान बाहरिले कोठु बॉम्बे रु कोथिरे SS राजपुताना द नेम ऑफ द शिप जो शिप रे से बॉम्बे रु बाहरिले से शिप रो नाम होची SS राजपुताना. ओके सो गांधी sailed from Bombay on the SS राजपुताना at noon. कौ समय रे बाहरिले ठीक 12टा समय ठीक दिन 12टा बेले से बाहरिले on August 1931. केबे बाहरले 1931 अगस्त मासरे अगस्त मास 1931 डेट 29 अगस्त 29 रे से बाहरिले कोठु बॉम्बे रु accompanied by तांको सटा की जाइथिले his youngest son Devdas तांको सानो पुओर ना कोन देवदास. his chief secretary तांको chief secretary किए माधव देसाई तांको ना होची माधव देसाई जहा को की गांधी कोन डाकंती whom he said out Boswell. यार अर्थ पिला टिके बुझो मु लाइन बाय लाइन कहूची बुझिया पे चेष्टा करो.
out Boswell is a person who keeps diary. Boswell जने लोक थिले जे कि सब बेले प्राय डायरी मेंटेन करूथिले एंड माधव देसाई मध्य सेई भलिया जने लोक थिले तांकोठु भी अधिक से डायरी मेंटेन करूथिले तो सेठी पई गांधी जी तांको डाकुथिले आउट बोसवेल क्लियर चल तांको सेक्रेटरी थिले माधव देसाई मिसेस लेड पार्लल नायर एंड एड जी बिरला ए टेक्सटाइल मिलेनियर पंडित मालविया एंड मिसेस नायडू ए किछि जन विशिष्ट व्यक्ति तांको सहित थिले एंड कीप इन माइंड दैट एमाने तांको सहित जाई नथिले शिप रे को पर्यंत अप टू द पोर्ट पर्यंत से माने गांधी जी को पाखरे थिले तांको एकम्पानी करिथिले किंतु शिप रे से एकुटिया जाइथिले अच्छा जाउचंती कोठी की देखिबा सो गांधी वाज proceeding to sole delegate of Congress to the second roundtable conference in London. So कोठी की जाउचंती where Gandhi is going to London. हमें को मसीहार कथा पढुचु पिला आगे लक्ष्य करो हमें पढुचु 1931 that means before independence स्वाधीनता पूर्वर कथा विषय रे हमें पढुचु ये लंडन जाउचंती कोन पाई लंडन जाउथिबे बोली भाबो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पाई द्वितीय गोल टेबल बैठक पाई से जाउचंती as the sole delegate of Congress सत्ते बेले हमर गोटिए पॉलिटिकल पार्टी थिला कोटा सेटा कांग्रेस and he was the sole delegate of Congress that means he एकुटिया कांग्रेस को बा इंडिया को रिप्रेजेंट करबा को जाउथिले कोठी की लंडन मन्ने कर पिले कॉलेज रे किछि गोटे तमर प्रॉब्लम हेछि एंड तमे सेटा गोटे स्ट्राइक करूछो ओके जेते बेले स्ट्राइक करूछो स्ट्राइक रे तमे बहुत पिले बसुछो 10 15 20 25 30 100 200 पिला तमे स्ट्राइक करूछो माने कर कॉलेज अथॉरिटी तमो कहिले कौन है पिले कौन कथा तुम कौन स्ट्राइक रे बसछ तुमको डाकिले तो तुम भीतर जिते बड़े तुम तुम कथाटी रखिबो तांका सामने रे जे हमर ई प्रॉब्लम हेछि बोली तुम भीतर के तो जणे जीवो ना एंड जो जण को जाउची से तो पर्सनल व्यू दउनी ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल 25 स्टूडेंट 50 स्टूडेंट 100 स्टूडेंट 200 स्टूडेंट व्हाटएवर इट मे बी तो तुम समस्त जोटा चाहुचो से कथाटी को से रखिया को जाउची as like Gandhiji was the sole delegate of Congress or India to represent India in front of the second conference round table conference पाई जाउथिले इंडिया को रिप्रेजेंट करिया पई इंडिया कोन चाहुची ए जिंसो करिया राइट नाउ तो ए पर्यंत पिले कंफर्म हे गेलो जे now Gandhiji is going to London in SS Rajputana. The time is 1931 August 29. Right? Let's move to the next. No other delegates were necessary since he spoke for the organization and for a considerable segment of vocal India. he is सेटा को मन माने करूना हंती जे से एकुटिया ही जाउचंती रिप्रेजेंट करिया नो से समस्तकर वॉइस नै कि जाइचंती रिप्रेजेंट करिया पे कोठी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ओके सो नेक्स्ट पेज वर्तमान से बाहर ले जिबा को इन लंडन फ्रॉम सितंबर 12th तले लंडन केबे पहुंचचंती रे सितंबर 12 तारीख रे जाई के पहुंचचंती बाहर थिले केबे अगस्त 29 रे तो ए 10-15 दिन लागि जाई छि तांकु जाई कि लंडन रे पहुंचीबा को सो इन लंडन फ्रॉम 12th सितंबर टू 5th डिसेंबर केबे रु केबे पर्यंत रहिचंती 12th सितंबर रु 5th डिसेंबर पर्यंत से लंडन रे रहिचंती
He stayed most of the time at Kinsley Hall, an East Settlement house. कोठी जाके रहिथिले किन्सले हॉल रे रहिथिले जेमती देखिबा हमको बाहर राज्य रो लोक आसिले हमर भुवनेश्वर अतिथि भवन अछि सबुठी अछि केवल भुवनेश्वर रे नहे सबुठी अछि सबु राज्य रे देश रे आउट ऑफ कंट्री आउट ऑफ स्टेट रो लोक आसिले ताको रहिया पई जगह थाए सेमती लंडन रे किन्सले हॉल अछि जोठी की ये जाई के रहिथिले as guest of Muriel Leicester केमती रहिथिले से Muriel Leicester is a person तांकर गेस्ट भाବରେ से सेठी रहिथिले who had visited him in 1926 अच्छा ये तांको गेस्ट भाବରେ काहे की रखिचंती सिए मध्य 1926 रे गांधी जी को पाखु को आसीथिले mornings he took walks through the nearby slum areas सकाळे सकाळे से किन्सले हॉल रे रहउतिले सकाळे सकाळे से कोन करंती टिके मॉर्निंग वॉक रे पळै जानती कोठी को नियर बाय द स्लम एरिया माने पिले टिके अर्बन एरिया टिके गाउली एरिया ई जगह उठिके बुलिबा को से पळांती and men and women on the way to work would smile at him and engaged them in conversation and later came to their homes. गांधी जी को कपड़ा लोक पिले समस्त जानी थिबो गांधी जी कोन पिनहंती रे आंठू ऊपर को धोतीटे पिनहंती धळा गंजीटे पिनहंती आ तांकर किछि वस्त्र नाही एही सब कपड़ा सती लंडन रे लोक जते बेले तांको देखुचंती लोक माने जो माने काम को बाहरी चंती स्त्री लोक पुरुष लोक समस्त जते बेले देखुचंती तांको देखि टिके स्माइल करचंती हसुचंती रे कोन ए लोकटा एमिति कपड़ा पिंधी छी ओके तांको विषय टिके कथा हुंती कथा है कि पुणी तांको रास्ता रे पळै जानती लेटर परे गांधी जी तांको सते एते मिसी जाइचंती एते कथा आइचंती समान को घर को सब बुलिया को जाइचंती देन चिल्ड्रेन कॉल्ड हिम छोटो पिला समान तो किछि जानि नहंती छोटो पिला जाके तांको कोन डाकी दियंती अंकल गांधी तांको डाकंती अंकल गांधी एंड गांधी वेयर इज योर ट्राउजर्स छोटो पिला तो समान जाके तांको कोन डाकंती सॉरी बट लाइन छाड़ी गली बोदे children called him uncle gandhi and sidled off to him and held his hand तांको अंकल गांधी डाकी डाकी पिले तांको साइड रे चलंती मन भितर टिके टिके भय थाए मिसिबार भी टिके आग्रह थाए जाकि तांको संगरे संगरे चली कि धीरे धीरे तांको हाथटी को धरिया को चेष्टा करंती one mischief loving youngster means दुष्टामी भरा क्यूट पिलाटे गोटे छोटा पिलाटी से कौन पचारुची one mischief loving youngster called out गोटे छोटा दुष्ट पिलाटी के ताकु जाके डाकुची हे गांधी where is your trousers जाके तांको कहूची हे गांधी तम ट्राउजर कुआडे गला the Mahatma had a good laugh गांधी टिके जोरे हसिले से पिल्लार कथारे टिके जोरे हसिले गांधी so this is all about your first unit right so let's summarize the first unit in the first unit what happens it's all about Gandhi and all about our independence how Gandhi's behavior Gandhi's personality his nature helped India to get independence so it's mentioned later but now till now what we read actually Gandhiji started his journey from Mumbai or Bombay at that time it was Bombay the time was 1931 August 29 he started his journey in SS Rajputana and some important people like his youngest son his secretary and some other important people they accompanied Gandhi up to the port Gandhi was the sole delegate of Congress to represent India in front of the second round table conference right next Gandhi
lived in London from 12th September to 5th December. There Gandhi lived in Kingsley Hall as the guest of Morier Leisure. In the morning time, he walked through the urban areas, and the people of that area, men, women, all, they looked at Gandhi and smiled on him. And some mischief-loving children, they are just mocking at Gandhi and asking him, "Hey Gandhi, where is your trouser?" Is all that. And Mahatma Gandhi reacted on that comment in smile and laugh. Nothing serious. So this is your first unit. Discussing in London in -4. Right? First unit already we have completed. Today we are going to read unit 2 and 3. Okay, open your book. So, unit 2, come to the text. Students, if you have any problem or any word problem, by the way I am saying, but तथापि जदि तुमर कोठी प्रॉब्लम रही जाउची बुझी पारु ना हो को वर्ड प्रॉब्लम होउची मते कमेंट रे जणा डेफिनेटली मैं आंसर करी ओके सो लेट्स मूव टू द टेक्स्ट ही वाज ए वंडरफुल न्यूज़पेपर कॉपी गांधी जी वर्तमान गोटे चमत्कार न्यूज़पेपर कॉपी बनी गले दैट मींस द फोकस पॉइंट ऑफ द जर्नलिस्ट राइट ओके देन he was a wonderful newspaper copy and journalists buzzed around him instantly. So वर्तमान ये गोटे वंडरफुल भारी चमत्कार जिनस टे पलटि गले न्यूज बनैबा पई न्यूज बनिबा पई आउ ए जो जर्नलिस्ट माने सब बेले वर्तमान ताको आख पाखरे से खाली घुरी बुलुचंती. One reporter questioned Gandhi about his dress. जड़े रिपोर्टर तांको क्वेश्चन करले कौन क्वेश्चन करले तांको ड्रेस ऊपर and Gandhi replied होजंदी you people he replied you people wear +4 minor -4 जते बेले तांको कपड़ा ऊपर प्रश्न पचारि चंती जने जर्नलिस्ट आ से उत्तर दउचंती कौन जे यू पीपल्स हैव +4 माइनस और -4 तमे लोक माने तमे माने +4 पिंधुच अर्थ तमे पैंट पिंधुच शर्ट पिंधुच टोपी पिंधुच जोता पिंधुच सॉक्स पिंधुच टाई पिंधुच ब्लेजर पिंधुच बहुत किछि पिंधुच सो तमर +4 मोर -4 मु धोतीटे पिंधुची गंजीटे पिंधुची बस मोर -4 एठी होची टॉपिक रो अर्थ. So when he was invited to tea in Buckingham Palace with King George V and Queen Mary, वर्तमान जते बेले गांधी जी को डकरा आछि कोठी बकिंगहाम पैलेस रु किए डाकी चंती किंग जॉर्ज फिफ्थ एंड क्वीन मैरी राजा रानी दुई जन डाकी चंती महात्मा गांधी को तांको पैलेस को चा पीवा पई अर्थ कथबार्ता करिया पई गेस्ट भाबरे डाकी चंती. ऑल इंग्लैंड वाज एगॉग ओवर व्हाट वुड वेयर. वर्तमान टोटल इंग्लैंड अनै की रही छी जते बेले से रजान को पाखु भेटिबा को जाउ छ निश्चित कोन गोटे भलो पिंधी की जिबे ना आमर कोनोसी पार्टी फंक्शन कोठी गोटे भलो जगह को जिबार थिले आमे सबटु भलो ड्रेस निजी को प्रिपेयर करि के हम जाऊ. सो सेमटी टोटल इंग्लैंड आज अनै की रही छी गांधी आज कोन पिंधी की जिबे. He wore the usual lion cloth sandal and a shawl and his dangling dollar watch. As usual जेमिति जहा पिंधंती तांको धोतीटे पिंधिले गंजी गोटे पिंधिले आउ तांकर शालटी ऊपर पकेले आउ तांकर जो घंटाटी अंटारे से झुलै थांती सेही घंटाटी झुलै की बाहरी पड़ले. Subsequently someone asked Gandhi whether he had enough on. किए जने तांको सेठी पचारिले अच्छा गांधी आपण कोन सफिशिएंट कपड़ा पिंधि चंती
जो जाउचंती, इज इट एनफ? द किंग ही रिप्लाइड, वर्तमान गांधी तांको रिप्लाई दउचंती, द किंग हैड एनफ ऑन फॉर बोथ ऑफ अस। से कहउचंती मु अधिक कोन पिंदी की जीबी, मु जहा भी पिंधिबी निश्चित भाव में रजांको पाखरे ताठू बहुत अधिक अछि, तो मु कोन आ अधिक पिंदी की जाई परिबी? सो जेते पिंधिले भी मु तांकोठू कम ही रहिबी। सो व्हाई नॉट इन दिस क्लॉथ? नाउ he enjoyed himself everywhere. So ई जो स्टैंजा टी हमें पढ़िलु एथरो पिले कोन बुझुचो जे गांधी जी को प्रकार मनीष थिले? less egoistic, no egoistic you can say. He was not an egoistic person. आमठू आमे जेते उच्चा मनीष को भी भेटू आमर किछिटा इगो आमे साथरे धरि के जाई थाउ, आमे टिके भलो देखा जिवो, हमर पर्सनालिटी टिके भलो हबो, हमकु टिके भलो कहिबे, that is somehow ego. So Gandhi was a less egoistic person, and he doesn't have any kind of ego, you can say. Okay, let's move to the next stanza. He enjoyed himself everywhere. जोटिके जाइचंती निजको से एंजॉय करिचंती. He had talks with Lord Irwin, wartime prime minister. Irwin थिले जने तांकर wartime prime minister. तांको से भेटिचंती. डेविड लेलर्ड जॉर्ज, द आर्कबिशप ऑफ कैंटरबरी, कैंटरबरी रो जने प्रीस्ट थिले, तांको सहित से भेटिचंती. फील्ड मार्शल स्मार्ट्स, बैनेट शो तुम जानछो जने पोएट, जने राइटर एंड source of others, and went down into the country near Reading, pay his respect to Colonel Maddox, who had performed the appendectomy on him in Pune jail. विभिन्न प्रकार लोकों सहित जाइए से भेटिचंती. जने तांको भितर थिले कलोनेल मैडॉक, डॉक्टर जने थिले. जेतेबेले ये पुना जेल रे थिले गांधी जी, तांकर एपेंडिक्स प्रॉब्लम हेतिला, तांको से ऑपरेट करिथिले, तो तांको भी से भेटिबा को जाइचंती. तो समस्त को से भेटिचंती. विंस्टन चर्चिल रिफ्यूज टू सी हिम. विंस्टन चर्चिल को पाकु मध्य से जाइचंती, किंतु से तांको भेटिबा को मना कर दैचंती. ओके, नेक्स्ट. He also addressed innumerable public meetings and spent 2 memorable weekends at Oxford. बहुत लोक मानक सहित से भेटिचंती, विभिन्न जगह मीटिंग्स करचंती, तांकर कथा से रखिचंती. आउ सप्ताहर लास्ट 2 दिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से काटिचंती. इन दिस and in the private conversations he tried above all else to explain what he meant by the independence of India. ये जो मीटिंग्स करुथिले, पब्लिक गैदरिंग करुथिले, इतरे से कहूथिले कोन, ताकर वार्ताटी कोन थिला? ए पर्यंत ऑफिशियल मीटिंग तो हेइनी, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेइनी, तो ता पूर्वरो से जो पब्लिक मानक सहित भेटुथिले, कथा होउथिले, ताको जणाउथिले, कोन जणाउथिले? See, what is actually independence meant for India? India कौन इंडिपेंडेंस, को प्रकार इंडिपेंडेंस चाहूची? इंडिपेंडेंस रो अर्थ कौन इंडिया में? He would cut off from the empire entirely from the British nation, not at all. इंडिया चाहूची रूलरशिप टा पूरा कट ऑफ हवा, ब्रिटिश एम्पायर करू कट ऑफ हवा से, किंतु नेशन रु नहीं. तार अर्थ ब्रिटिश मानक शासन रु आमे मुक्त हबु, आमे इंडिपेंडेंट हबु, किंतु तार अर्थ नुहे आमे ब्रिटिशर्स मानक सहित कोनोसी संपर्क रखिबुनी. इंडिया इंडिपेंडेंस रो अर्थ आइसोलेशन चाहूनी, बस ता एम्पायरशिप रो अलगा हबा पई चाहूची, इंडिपेंडेंट हबा को चाहूची. ओके, इफ आई वांट इंडिया टू गेन एंड नो ग्रीफ, सो इंडिया चाहूनी जे जो ब्रिटिश एम्पायरशिप रो आमे अलगा हबो, तार सुखरे दुखरे आमे भागीदार हबुनी बोली आमे कहूनु.
आम सबुथे सामिल हबु किंतु रूलरशिप रु कट ऑफ हबु। द एम्पायरशिप मस्ट गो, एम्पायरशिप तो निश्चित जीव एंड आई शुड लव टू बी एन इक्वल पार्टनर विथ ब्रिटिश sharing her joys and sorrows, or an equal partner with the dominions. So empireship अलगा हबो, आमे इंडिपेंडेंटली चलिबू, आमे तार गोटे इक्वल पार्टनर है कि चलिबू, तार खुशी तार दुख सब किछि आमे समान भाबरे बांटिबू इक्वल पार्टनर भाबरे, किंतु एम्पायरशिप विल मस्ट गो, निश्चित एम्पायरशिप जीवो। Okay, then but it must a partnership on equal terms। तमरो कौन सी कंडीशन माने कि आमे इंडिपेंडेंट है जीवो एमती है परिबोनी। लाइक सपोज ब्रिटिशर्स माने इना मानी नेबे यस आमे तुम देश छाड़ देलु, यू आर इंडिपेंडेंट, बट इन ए कंडीशन, कौन कंडीशन, आमर संविधान तमर देश रे चलिबो, बा तमर एतक सुना प्रति वर्ष आम कंट्री को जीव, बा तमर स्लेवरी सिस्टम रहिबो, ए सब जिनस जदि रहुची दैट मीन्स एटा गोटे इक्वल पार्टनरशिप रे इंडिपेंडेंस नुहे, एटा गोटे कंडीशन बेसिस इंडिपेंडेंस। मु तुमको स्वाधीनता देबी एई अर्थ रे, तमे जते बेले थाना रु बेल आणुचो कोन होची, से माने तुमको किछि कंडीशन रखुचंती, तमे ठीक अच्छे बाहर बुली पारिबो, जेल भितर रहिबोनी, किंतु कंडीशन प्रत्येक सप्ताह रे तमे थरे आसी देखा करिक जीवो, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री, व्हाटएवर तमे छाड़ी के जाई परिबोनी। सो कंडीशन बेसिस हे जाउची। सो गांधी जी कहउचंती इंडिया ई प्रकार इंडिपेंडेंस चाहू इक्वल टर्म्स एंड कंडीशन रे, तमे जदी तमर जो कंडीशन रे तमे चलेइछ तम सिस्टम को, हमको सेटिकी इंडिपेंडेंस रहइबो, आमे आम अकॉर्डिंगली आम देश चलेइबो, नो टर्म्स एंड कंडीशंस, राइट। ओके, नेक्स्ट देन he was describing precisely and with remarkable precision the status free India assumed in the Commonwealth in 1948। आ जो प्रकार इंडिया रो स्वप्न से देखी थिले, जो प्रकार जिनस बुझे थिले सेटाकार लोक माननकु, तार अर्थ से गोटे मंजी पोती थिले, जो मंजीटी गच्छ भाबरे बा गच्छरे परिणत हैला। कॉमनवेल्थ इंडिया केबे हैला 1948, दैट मीन्स जेबे हमर संविधान तयारी हे सरला, राइट। ओके, नेक्स्ट he went even further, he saw what many of his followers have not yet discerned, isolated independence is not the goal। हम चाहूनु आइसोलेटेड इंडिपेंडेंस। देखो सपोज तमे घर भीतर अछ, तमे भाबुच जदि कोन से गोटे पिला मो घरे मोर इंडिपेंडेंस नाही, सो ए जगह इंडिपेंडेंस रो अर्थ तमे कोन को भाबरे नउछ, माने कर मो रूम रे कबाड़ देकी रहिली, मते कोन से लोक मते डिस्टर्ब करिवार नाही, किछ नाही, मो इच्छा जहा मो सेया करबी, बट मो बाहर को जिपेनी, बाहर को गले कोन प्रकार मते से माने घर लोक जे बापा जहा कहि मानिया को पड़िबो, मां जहा कहि मानिया को पड़िबो, कि मते कोन से गोटे रूल्स रेगुलेशंस अछि ता भितर मते चलिया को पड़िबो। दिस इज आइसोलेटेड इंडिपेंडेंस, राइट। किंतु तमे से घर भितर चलुच बुलुच, तुम इच्छा रे तमे कोठी बसुच, कोठी टीवी देखुच, कोठी खेलुच, ई जो जिंसटी दैट इज द एक्चुअल इंडिपेंडेंस। क्लियर। सो गांधी जी कहउचंती इंडिया आइसोलेटेड इंडिपेंडेंस चाहुनी, दैट मीन्स मु इंडिपेंडेंस पाई गली, बट मोर समस्त सहित संपर्क कटि गला, मु कहा लेन देन रे भागीदार नुह, मु कहा सुविधा असुविधा रे छेड़ा हेबिनी, दैट इज आइसोलेटेड इंडिपेंडेंस। आइसोलेटेड इंडिपेंडेंस इज नॉट द गोल ऑफ इंडिया। क्लियर। ओके, नेक्स्ट इट इज वॉलंटरी इंडिपेंडेंस। वॉलंटरी इंडिपेंडेंस हमको दरकार। Liberated colonies so treasure their new found independence, they think it is a viable reality, but the law of the nature in love, friendship, work, progress and security is creative independence।
ए क्रिएटिव इंडिपेंडेंस आमे चाहूँ जो थरे कि आमे सबुथिरे फ्रेंडशिप रहिबो भल पाइबारे फ्रेंडशिप रे वर्क प्रोग्रेस एंड सिक्योरिटी एवरीथिंग जो थरे थिबो तम आम भितर से सब जिनस रहिबो इट इज इक्वल पार्टनरशिप और क्रिएटिव इंडिपेंडेंस दैट इज द aim of India. So in the second unit what happens? Gandhiji met with different kinds of peoples where he को जगह रे तांको सम्मान मिली को जगह रे अपमान मिली सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हवा पूर्वरु निजर मोटो कौन सेटा से पब्लिकली डिक्लेयर करछंती समस्त को जणैछंती इंडिविजुअली पब्लिक मीटिंग्स करिगी से जणैछंती समस्त को जे इंडिया एया चाहूची तार अर्थ इंडिया सत मार्ग रे अछि समस्त भल से चाहूची इंडिया इज अ कंट्री who wants to distribute love friendship everything right. So in the second unit what was the motto of India it is described here. What is in which way India wants independence. This is your second unit. Okay, so let's move to the third unit. So समय मिलले पिबेले आमे क्वेश्चन आंसर डिस्कस करिबी केते बेले ओके एबे आमे टॉपिक स्टार्ट करबा. सो नेक्स्ट यूनिट 3 everywhere he made friends by his charm frankness humanity and accessibility. सबुठी इंग्लैंड रे सबुठी जोठी की जाइछंती से बंधुत्व बांटी चंती भल पाइबा बांटी चंती तांकर जो खोला हृदय एथि पे सबुआडे से आदृत होइचंती. He even walked into the lion's den in Lancashire where his agitation for khadi against foreign cloth had caused painful unemployment. ई सब भितरे से गोटे सिंहर गुंफा को पसिचंती. एठी सिंहर गुंफार अर्थ इट्स अ कंपैरिजन गोटे कंपैरिजन दिया जाइछि. एठी तार अर्थ गोटे डेंजर जगह को से जाइचंती. एटा कोठी रे एटा होचे लैंडस्कायर रे सेठी कोन असुविधा हेतिला गांधी जी तांकर कोन असुविधा करिसंती जोटा को तांकर गोटे डेंजर प्लेस बोली कुहा जाउची. गांधी जी जते बळे खदी आंदोलन करिथिले बा विदेशी वस्त्र वर्जन करिबा आमे विदेशी वस्त्र पिंधिबानी आमे निजे खदी तयारी करिबा आ पिंधिबा एई जो आंदोलनटी से करिथिले या द्वारा कोन हेतिला तो बाहर आम से इंग्लैंड रू आम आसूला कपड़ा आसूला कपड़ाटा जो आसूला से गोटे फैक्ट्री तो तैयारी होउतिला ना तो जो फैक्ट्री तैयारी होउला से किछि एम्प्लॉइज थिले काम करूतिले आमे जते बेले तांको वस्त्र वर्जन कर देलु आ पिंधिबुनी से कंपनी बंद हो गला तो अनएम्प्लॉयमेंट बाहरी पड़ला. तो अनएम्प्लॉयमेंट जते बेले बाहरी पड़ला से लोक मानकर राग रहिला काहा ऊपरे गांधी जी को ऊपरे right. So what is written here आउथरे पढ़ो पिले देखो कोन लिखा है जी. He even walked into the lion's den in Lancashire where his agitation khadi and against foreign cloth had caused painful unemployment. ई जो हमर खदी आंदोलन करा जाइथिला एथि पई सठी अनएम्प्लॉयमेंट तयारी ही जाय तो एबे से जगह को जाइछथि. At a meeting of textile mill workers one man said सेठी मध्य से एमिति बंधुत्व बांटी चंती तांकर वार्ता एमिति भाबरे प्रसार करि चंती तांको भितरे जने वर्कर कहूची I am one of the unemployed मु मध्य से unemployed भितरु जने but if I was in India would say the same thing that Mr. Gandhi is saying. भल पाइबार ताकत केते देखो जो लोक से कहूची मु मध्य सेही अनएम्प्लॉयड भितरु जणे किंतु मु भी ए समान कथा कहि थांती जदि मु जणे इंडिया रो बासिंदा हेई थांती जणे इंडियन हेई थांती
आज गांधीजी जो कथा कहउचंती मु मध्य सेई कथा कहि थांती सो बुझी पारिचंती से माने हमर अर्थ कोन थिला तांको विरोध करिवार अर्थ कोन थिला विरोधटा को जणे लोक को आमे करिनु हम देश पई आमे विरोध करिजु नेक्स्ट देन a delightful photograph taken outside the Greenfield Mill at Darwin shows Gandhi wrapped in white homespun from neck to knee, for it was cold, and squeezed in among cheering, applauding women, one of whom, to his embarrassment, is holding his hand. एई भितरे गांधी जी को एते भल पाइबा मिली गोटे फोटोग्राफ निया हिची तांको सहित जोठी कि तांको मुंडरू गोड़ पर्यंत केवल धड़ा लोक इंग्लैंड में समस्त धड़ा लोक मेन वुमेन समस्ते स्त्री लोक पुरुष लोक समस्ते तांको घेरिकी रहिचंती जणे एमिति कि स्त्री लोक तांको हाथ को मध्य धरिची सो एते भल पाइबा से पाइचंती सेथु he made friends even among those he hurt सेमाननको भितर भी से बंधुत्व बांटी के आसीचंती भल पाइबा पाई के आसीचंती जो माननको इभिन हमें आघात देइथिलु तांको अनएम्प्लॉयड बनै देइथिलु ओके नेक्स्ट आई फाउंड दैट माय वर्क लाइज आउटसाइड द कॉन्फ्रेंस मु भाबुची सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पूर्वरु मु मो काम किछि मात्रा रे करि देइछि जोथि पाई मु आसीतिले इंडिया कोन चाहूची बोली ई जिंस बोध हुए मु कही सारी बांटी सारी देन he told a London audience this is the real round table conference एठी लंडन रो ऑडियंस को गांधी जी मध्ये एक कथा कहिसंती एटा ही मोर प्रकृत राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जोटा मु आज कॉन्फ्रेंस बाहिरे बनेइची सब जिंस एटा ही मोर प्रकृत राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस the seed which is being sown now may result in softening the British spirit and preventing the brutalization of human beings. आज ये जो भल पाइबार मंजी मु ब्रिटिशर्स मान हृदय रे पोती की जाउची निश्चित दिने ना दिने ये सॉफ्ट हबो गछ बनी जिवो आ एते बड़ गछ हे जिवो जे ब्रिटिशर्स मान भितरु ये जो ब्रुटलाइजेशन क्रुएल्टी निष्ठुरता मनुष्य मान प्रति निष्ठुरता ये भावना को निश्चित भाव में दिने ना दिने ये मारिदेव या मोर निश्चित ये विश्वास अच्छी देन माधव देसाई's डायरी shows that ये सब जिन हम जानवा को कोट पाउछु महात्मा गांधी तो निजे कहि नांती ना माधव देसाई को डायरी रो हमें जानवा को पाउछु माधव देसाई's डायरी shows that महात्मा often got to bed at 2 am प्राय प्रत्येक दिन से राति 2टा बेले बिछोना को जाइचंती एंड अवोक एट 3:45 am ठीक घंटे 45 मिनिट परे 3:45 रे पुणी से उठी पड़ंती फॉर प्रेयर करिवार थाए रोट लेटर्स एंड रीड पेपर्स जहा को विभिन्न जगह को चिट्ठी लिखिवार थाए आजिकल हम कोन करछु फोन लगे दोछु सेते बेले चिट्ठी लिखिवार थाए बहुत जगह को चिट्ठी तांको लिखिवार थाए चिट्ठी लिखंती पेपर पढ़ंती रेस्टेड अगेन फ्रॉम 5 to 6 पुणी 5 टा रु 6टा पर्यंत टिके सोई पड़ंती एंड हैड नो रेस्पाइट फ्रॉम देन टिल द नेक्स्ट मॉर्निंग आ सेई जो उठंती 6टा रे ता पर दिनर राति 2टा पर्यंत पुणी तांको आ समय न थाए स्मॉल वंडरिंग दैट ही ओकेजनली स्लेप्ट एट सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस आ जो समय कॉन्फ्रेंस चलीथिला बोध हुए से सोई नांती बहुत कम सोई थिबे he did not give it his best जदि बा ए कॉन्फ्रेंस रे तांकर भलो प्रदर्शन हेई पारला नाही तार अर्थ आमे सक्सेस पाइलुनी सेते बेले द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज बाउंड टू फेल सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रे आमे फेल ही जाइतिलु लॉर्ड रीडिंग ए मेंबर ऑफ द ब्रिटिश डेलीगेशन लॉर्ड रीडिंग जे थिले से कोन कहले फॉर्मुलेटेड द ब्रिटिश पर्पस इन वन सेंटेंस ब्रिटिशर्स माने कोन चाहुचंती गोटे लाइन रे से कहि देले कोन कहले आई बिलीव दैट से कहउचंती जो लॉर्ड रीडिंग से कहउचंती आई बिलीव दैट द ट्रू पॉलिसी बिटवीन ब्रिटेन एंड इंडिया इज दैट we should in this country strive
all we can to give effect to the views of India while preserving at the same time our own position, which we must not and cannot abandon. Mr. Reading कहले कौन आमर निष्पत्ति या जे आमे विश्वास करछु एथिरे जे कौनसी प्रकार आमे इंडिया छाड़बू नाही जदि छाड़बू आमर पोजिशन से सेम रहिबो आमे जेमति भाबरे तुमको रूल करछु सेमति भाबरे रूल करिवो बस आमे छाड़ी के पळे आसीबो. It is not accepted by Indian people. एटा तो आमे चाहुनु ना तम रूल एठी रहिबो बट तमे छाड़ी के पळे जिमो अदरवाइज आमे शासन ही करिवु छाड़ीबुनी एटा से कहउछन. यार अर्थ कोन रे पिले they are not ready to leave India. An irresistible force जबरदस्त करा होची तार अर्थ इंडिया अर्निंग टू बी फ्री जबरदस्त करा होची जे हमकु से माने फ्री छाड़ीबे नाही. मेट एन इम्प्रोबेबल ऑब्जेक्ट ब्रिटेन्स विश टू स्टे इन इंडिया तार अर्थ से माने इंडिया रे ही रहिबे इंडिया से माने छाड़ीबे नाही. दैट मेड एग्रीमेंट इम्पॉसिबल. तो आमर जो प्रस्ताव से प्रस्ताव रे से माने राजी होबा परिवर्ते तांकर ओपिनियन जणाइले तार अर्थ से माने छाड़िबा को चाहू नांती इंडिया को फ्री करिया को चाहू नांती जहा द्वारा कि एठी मध्य ए सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रे मध्य हमें फेल हेलु. देन द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड असाइन्ड 2 स्कॉटलैंड यार्ड डिटेक्टिव टू द गॉड गांधी इन इंग्लैंड. तो जते बेले हमर प्रस्ताव भांगी गला गांधी वर्तमान फेरिबे तो तांको पई 2 जण सिक्योरिटी गार्ड तांको दिया जाइथिला. दे वर स्पेशल पुलिसमैन स्पेशल से माने बहुत गेट इन साइज राक्षस ओळ्या पूरा देखा होचंती सत्य बड़ बड़ सिक्योरिटी 2 जण हु यूजुअली प्रोटेक्टेड रॉयल्टी जो माने कि प्राय तो राजा रानी एई मानकु प्रोटेक्शन दियंती सेई भले 2 जण तांको सिक्योरिटी गार्ड दिया जाईची. दे ग्रू टू लाइक द लिटिल मैन ये छोटिया मनीष बे तांको पाखरे सेमती राक्षस ओळ्या देखा जाउथिबा 2 जण. Unlike most dignitaries, Gandhi did not keep them at arm's length or ignore them. तो ये सिक्योरिटी माने जो पुलिसमैन माने थिले प्राय तो लोक तांको इग्नोर करंदी ये जस्ट बॉडीगार्ड किंतु ये तांको सहित फैमिली मेंबर्स भलिया मिसुतिले केबे तांको इग्नोर करू नथिले. he discussed public affairs with them छोटो छोटो पब्लिक अफेयर मध्ये तांको सहित से डिस्कस करूथिले and visited their homes तांको घर को मध्ये जाय के बुली के आसीचंती. before leaving England he requested that they be allowed to accompany him to Brindisi. so छाड़ीबा पूर्वरु से रिक्वेस्ट मध्ये करथिले ए 2 जण को तांको कोठी छाड़िया पई ब्रिंदिसी एयरपोर्ट रे सॉरी पोर्ट रे छाड़िया पई जहाज रे जोठी से बसिबे इटली रे whence he would sail from India जोठू से इंडिया को बाहरिबे से पर्यंत आसिया पई से रिक्वेस्ट करथिले. their chief asked the reason why तांकर जे चीफ थिले से कहले अच्छा काहे कि तुमको से पर्यंत से काहे कि जिबे because they are part of my family से माने मो सिक्योरिटी रहंती से माने मो फैमिली रो गोटे पार्ट ई रिप्लाई देथिले कि गांधी. From India, he sent each a watch engraved with love from Gandhi. अब इंडिया फेरिला परे तांको 2 जण को पई 2टी घंटा पठेइथिले जोथिरे कि गांधी जिंकर भल पाइबा बांधी कि थिला. So this is your third unit. I think the in London in -4 is complete. So see what we came to know in this topic. Why it is mentioned for you? आमर लक्ष्य जहाँ बस आम लक्ष्य स्थल रे लक्ष्य पथरे आमको आगे जीवार अच्छी. गांधीजी से बहुत अपमान पाई मान पाई अपमान पाई किंतु से मान अपमान रे से विब्रत ही नहांती कारण उद्देश्य आमर इंडिया रो इंडिपेंडेंस. तो निराश होबा सत्वे भी कॉन्फ्रेंस रे फेल होइचंदी लोक तांको पर क्रिटिसाइज करिचंदी तांको कपड़ा को नेकी तांकर रंग को नेकी सबुथे मध्य से विचलित हेई नाहंती. समान भल पाइबा समान वार्ता इंडिया रो कथा से रिप्रेजेंट करिके आसीचंती
ଆଉ जो मंजीटी से पोती बोध हुए तार फल आम खाई 1947 रे. Okay, so this is your total topic. I think you understood. If not, comment on the comment box. Definitely I will answer you. Okay, thank you. Have a nice day.